This call is now being recorded. Which of the following statement regarding the state legislature in India not correct? So हमें state legislature ऊपर हमें देखिया गया है ताले बहुत जिंस हमको recall करिवार अछि प्रथम हमें statement देखिबा provision relating to the state legislature are contained in part 6 of the constitution from article 168 to 212. Then every state legislature in India is necessarily bicameral, consisting of a legislative assembly and legislative council. Then the legislative assembly is the lower house and is directly elected by people through adult franchise. Fourth the legislative council where it exists, it is a permanent house and cannot be dissolved. कोटा हमको पचारि नॉट करेक्ट पचारला सो ए सब जाक ठीक अछि केवल बी ही भूल अछि एवरी स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया इज नेसेसरली बाइकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल इज नॉट नेसेसरली नुहे समिति तो ए रिगार्डिंग हमें बहुत सारा जिंस हमें मन पकेबा एबे लेजिस्लेटिव असेंबली ऊपर आउ लेजिस्लेटिव काउंसिल दीटा रंग देखिबा लेजिस्लेटिव असेंबली जहा जहा मन अछि तुमे कहिबो मु भी जो अनुसार कहिबी तुम सहित ऐड करी करी जीवो तो स्टेट लेजिस्लेचर हमर कोन गवर्नर रेले कंसिस्ट ऑफ गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा जोडा कहूची आ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद तापरे हम देखिया गले हमर होची बाइकैमरल लेजिस्लेचर 6टा हम पाखरे स्टेट रे अछि बाइकैमरल लेजिस्लेचर जोडा की गोटे होची आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटक आउ उत्तर प्रदेश देन बिहार जदि भूल कहउथिबी मते देखिए खाली ऐड करियो मैडम सर माने कंपोजिशन हम कोन देखिया गले सिर होछ समस्त गवर्नर रहले लेजिस्लेटिव असेंबली रहला लेजिस्लेटिव काउंसिल जो माने एमपी एमएलए सब रहले सब तापरे तापरे कोन सब अछि हमरो स्ट्रेंथ कथा देखिबा तापरे इलेक्शंस केमि होची से जिंस टिके टिके हम मन पके तो जेमिति होची कि जे प्रथमे असेंबली कहिबी काउंसिल हला असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली एवं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कथा देखिबा स्टेट असेंबली रे होची कोन जेमिति मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमर केते मैक्सिमम स्ट्रेंथ होची 500 आउ मिनिमम स्ट्रेंथ होची 600 सॉरी 60 600 अरुणा हां 60 तापर अरुणाचल प्रदेश सेति पे अछि 60 सिक्किम रे अछि हमरो 32 आउ कोन अछि हमर नागालैंड रे अछि 60 आउ कोन थला गोवा एंड मिजोरम गोवा एवं 30 40 हां 40 आउ काउंसिल ले मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते रहबा दरकार मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहबा दरकार असेंबली रो 1/3 रहबा दरकार तापरे मिनिमम स्ट्रेंथ होची हमरो 40 जो मेंबर माने आसीबे से माने होचंती इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेबे आउ जोटा कि या विषय किए केते रहिबा दरकार स्ट्रेंथ ता केते रहिबा दरकार से हमरो पार्लियामेंट ताकू डिसाइड करथाय आ इलेक्शन जो होची से जो इलेक्शंस ता मैनर ऑफ इलेक्शंस ता से केमिति होची यार असेंबली रे सेटा होची डायरेक्ट इलेक्शन होची हमर जेमति वोट हे कि एडल्ट 18 वर्ष लोक एडल्ट फ्रेंचाइज अनुसार हे गेला डायरेक्ट इलेक्शंस आ किंतु एथिरे होची हमरो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेबे केते हेबे 5/6 हमरो टोटल मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेबे proportional representation by single transferable vote अनुसार उन तारि भितरे उन केते रहबे 1/3 समान आसीबे लोकल बॉडी से भली 1/3 केते आसीबे लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर जमान रहबे हला एठु जमान छिबे ता भितरे रहिथिबे असेंबली मेंबर तापरे आउ कोन छी 1/12 गोट रहला दीटा 1/12 रहइबो 1/12 होची गोट माने ग्रेजुएट हिथिबे हला आउ जो माने टीचर गोटे है कि सेकेंडरी स्कूल रु तल को नथिबा दरकार से माने डन तापरे कोन अछि सर आज्ञा मैडम कोन मैडम सर 1/6 गवर्नर चूज करिवे कोन हां नॉमिनेट करिवे जोटा राइट 1/6 नॉमिनेटेड वाला जिनस को हम जाउतले 1/6 होची नॉमिनेटेड बाय गवर्नर को जगह रु से माने नॉलेज एक्सपीरियंस रु देखिबे जेमिति कि लिटरेचर
आर्ट सोशल सर्विस साइंस ये जिनस आ गोटे कोऑपरेटिव मूवमेंट कोऑपरेटिव मूवमेंट थिला आ एपट रे जोडा थिला सेटा होची एंग्लो इंडियन जोडा थिला सेटा हटे दिया जायछि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 बेसिस रे हटे दिया जायछि तापरे ड्यूरेशंस समय काल ड्यूरेशंस देखिया गले 5 वर्ष तार ड्यूरेशंस डिजल्व हबो गवर्नर को अनुसार पार्लियामेंट जतो इमरजेंसी लागिवो से अनुसार एका थरे के 1 ईयर पर्यंत बढ़ी दी हबो एक्सटेंड कर दी हबो आ वंस 6 मंथ कंप्लीट हबो नै केते भेटा होची केते ना या पे से जिंस नै अलगा इमरजेंसी ठीक है तापरे होची कोन हमर येटा होची केते जो काउंसिल होची कंटिन्यूइंग चैम्बर टा परमानेंट बॉडी केते जिवे 1/3 लोक रिटायर्ड हेबे प्रत्येक एवरी सेकंड 2 वर्ष किंतु से माने 6 वर्ष पर्यंत सर्विसिंग ईयर टा होची 6 ईयर एलिजिबल री इलेक्शन पई कि नुहे री इलेक्शन पई एलिजिबल ओके रीनोमिनेटेड हे परिबे मध्य गवर्नर को द्वारा सेमिति तापरे कोन अछि स्पीकर रहिले प्रेसिडिंग हमर जे करूचंती से होचंती स्पीकर हमर ता तळुक रे डेप्यूटी स्पीकर ता तळुक हमर रहिले पैनल गोटे बसिथिबो जोटा सेही बेसिस जदी हमनकर वैकेंट रहिले स्पीकर बा डेप्यूटी स्पीकर रहिले वैकेंट से गोटे पैनल थिबो 10 जन के पैनल थिबो सेही 10 जन पैनल रु तांको रखिबे स्पीकर हिसाब रे किंतु जदी पूरा फुली वैकेंट थिबो सेटा प्रेसिडेंट देखिबे माने से चैम्बरटा पूरा एटा एब्सेंट केतरा रे कहउची আজি নাহান্তি তাহলে এই প্যানেল রু বাহার করা যিবো কিন্তু সে ভ্যাকেন্ট হই যিবো যেতବେଳେ সেতବେଳେ নমিনেট করা যিবো প্রেসিডেন্ট को गवर्नर को द्वारा ठीक अछि सेही बळी पावर ड्यूटी से माने कोन करंती ए माने जो कोडा बरो प्रेसिडिंग ऑफिसर जो से माने कोन ऑर्डर आउट डेकोरम तो मेंटेन करंती दा सिट आउट कोन फाइनल डिसीजन मनी बिल रो तांको डिसीजन फाइनल हमर डिस्क्वालिफिकेशन लोकम करिवे 10 शेड्यूल अनुसार ए तो जिंस ओथ अफर्मेशन से बळे गवर्नर तांको ओथ जो मिनिस्टर बसिबे से मानको ओथ एंड अफर्मेशन दियंती तापरे क्वालिफिकेशन से मान जो बसिबे एटा इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशंस कथा कहया जाय से माने सिटीजन हितबा दरकार तापरे ओथ जो दियंती से माने सॉरी ओथ दियंती ओथ नियंती सर ओथ दियंती के तांगर गवर्नर तांको ओथ देबे आउ यूजुअली गवर्नर दियंती और प्राइम चीफ मिनिस्टर थांदी चीफ मिनिस्टर ना थांदी जे माने आसी बसंती नहीं से माने ना ठीक है तापरे एज केते एज होची 30 वर्ष के कोहा पई एटा काउंसिल पई असेंबली पई 25 इयर्स डन आउ तपरे रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 जोडा अछि 1951 अंडर रे सचरे कोन अछि रिजर्व सीट कथा कहै छी नै कि तापरे डिस्क्वालिफिकेशन हम जानि छै 10 शेड्यूल रे बहुत सारा जिंस अछि जेमिति कि अनसाउंड माइंड इंसॉल्वेंसी सिट हमरो जदी तुमे फॉरेन सिटीजनशिप नै जीवो सेथिरे ए रिगार्डिंग तुमको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हां ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कथा काली कहउतली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे कोन कोन हम जिंस थिला हम काली कहउतली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे कोन थिला ऑफिस एमिति गोटे थिबो जोटा कि जनरेट करतो प्रॉफिट आ सेटा कोन थिबो बाय एन एप्रोप्रिएशंस गवर्नमेंट द्वारा मिलिथिबो देखो ये होची सेटा माने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट थिला सेथिरे आउ कोन कोन थिला म तुमको कहय चाहूतली सेथिरे आउ कोन कोन थिला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे जो जिंसडा अछि सेथिरे एटा को बेसिस रे आसी हला या तो आर्टिकल टा मन रखथिबो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे आर्टिकल अछि 102 102 आउट होची 191 प्लस 1 ए रे अछि एटा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कथा तापरे आउ कोन जानिबार अछि ए जिंसडा हमरो कोनस रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डिफाइन हेनी नाइ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मध्य रे मध्य 1951 रे भी आरपी एक्ट रे भी डिफाइन हेनी एटा कोठी अछि पार्लियामेंट एक्ट 1959 अनुसार एटा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ताकू प्रोवाइड करा जाय छी एति जानिबार अछि तापर आउ कोन कहि जातला हमें कोन देखथले एठी डिस्क्वालिफिकेशन देखथले ना हाँ को डिस्क्वालिफिकेशन कोन कोन जगह रे हो एटा देखि दिले हमें खाली एटा कॉन्स्टिट्यूशनली मु जोडा कहली
कि जे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अनसाउंड माइंड इनसॉल्वेंसी सिटीजनशिप ए सब जिंस होची ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस रे डिस्क्वालिफिकेशन हेजिवो आउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 अनुसार केमी डिस्क्वालिफिकेशन होबो सेटा होची इलेक्शंस ऑफेंस द्वारा करप्ट प्रैक्टिस करिवो आउ कोन अछि क्रिमिनल कन्विक्शंस सेटा उठे आउ होची कॉन्ट्रैक्ट एई जो मु कथा कहउतली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कथा एठी जोडा अछि सेटा होची डिस्क्वालिफिकेशन अछि मु सेटा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कथा कहि दउतली सेटा माइंड रे सेटा बार बार पळि आसुला सेमिति न गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जोडा कि 25% एठी एठी जदि तुमे कोनोसी प्रकार माने गवर्नमेंट से जो व्यक्ति जनक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रो माने 25% शेयर रखुतबो तो ताहाले सेटा होची से ऑफेंस हबो ताको डिस्क्वालिफाइड कर दिया सर्विस से वाला देखिया गले करप्ट प्रैक्टिस करथो बा तुम ब्रेवेरी नउथो से जिंस रे लांच नबो से जिंस रे कटि जीवो सोशल क्राइम्स रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी ए सब जिंस रे जीवो एंटी डिफेक्शंस हमर कोड अछि 10th शेड्यूल रे ए सब जिंस अछि आगु कमे देखिबा क्वेश्चंस तापर जहां जासी हम देख प्रोवाइड करिबा तो से अनुसार हम एटा प्रोवाइड करले कि जे ऑप्शंस बी जोडा इनकरेक्ट अछि सेटा नुहे अननेसेसरी सेमि किछ आवश्यक नहीं स्टेट लेजिस्लेचर जोडे प्रोवाइड करछि पार्ट वीआई कॉन्स्टिट्यूशन 168 रु 212 पर्यंत अछि तापर कोन अछि द लेजिस्लेचर मे बी यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली और बाइकैमरल हम देखले एटा करंटली 28 टा स्टेट हम तीनटा यूनियन टेरिटरी अछि जोथरे कि असेंबली अछि यूनियन टेरिटरी हैव असेंबली इंक्लूडिंग जेमिति दिल्ली रे 17 टा सीट रहला पौंडीचेरी रे 30 टा सीट जम्मू कश्मीर रे 90 टा सीट हमकु दिया जायछि सेमिति सिक्किम रे 32 गोवा रे 40 टा मिजोरम रे 40 स्ट्रेंथ जो हम देखियो गले लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट पॉपुलेशन अनुसार डिपेंड करिवो सेटा कॉन्स्टिट्यूशन में देखिले 50 टा मैक्सिमम मिनिमम टा 60 पौंडीचेरी इज एक्सेप्शन विथ 30 मेंबर्स एतिर अछंती हमर 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 अनुसार हमर डिलिमिटेशंस कमिशन जो अछि सेथिरे कोन करछन लोकसभा जो सीट टाकू फ्रीज कर दिया है 2026 पर्यंत कर दिया है लेजिस्लेटिव असेंबली जो अछि कंसीडर द फर्स्ट एंड लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बोली कुहा जाय 32 को आसीबा विथ रेफरेंस टू द legislative assembly of the state. Okay, Pune again. The member of the legislative assembly are elected through direct elections based on adult franchise. देखिले एबे नहीं Correct. तो आंसर कौन करेक्ट द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 25 years रे मध्ये करेक्ट द quorum Correct. for a meeting of the legislative assembly is 1/5 of the total memberships এটা আমি 110 দেখলাম Sir, हाँ 110. yes আমি জানি না সেদিকে আমি সেটা ছাড় দিলে তারপর ডিউরিং দ্য ন্যাশনাল এমার্জেন্সি the tenure of the legislative assembly can be extended by 1 year at a time আমি এটা বি কহি দেলে ঠিক আছে স্যার সেটা হচ্ছে 1 2 4 3 incorrect is because 110 of total membership quorum ଆଉ কোন ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଟେନ୍ୟୁର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ହଉଛି 5 ବର୍ଷ ଆସେମ୍ବଲିଟା ଆଗରୁ ବି ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସରିଲେ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିବନି 6 ମାସ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମାନେ 6 month after 6 months ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେମିତି କି ମେମ୍ବର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ସ କାହାକୁ ଦେବେ ସ୍ପିକରକୁ ଦେବେ ଯଦି ସ୍ପିକର ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରକୁ ଦେବେ ସେଭଳି ସ୍ପିକର କାହାକୁ ଦେବେ डेप्यूटी स्पीकर को देबे Deputy Speaker. the chairman or presiding officer ସେମାନେ କଣ କରିବେ adjourn the meeting ଯଦି quorum ଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ membership ସେ ଜିନିଷ କୁହାଉଛି terminate if a member remain ଏଟା ବି ଗୋଟେ important ଜିନିଷ जो माने जो अछन मेंबर तांकर मेंबरशिप सेटा टर्मिनेट हे जिवो जदी से कंजिक्यूटिवली 60 दिन पर्यंत एब्सेंट अछंदी अने सरी हमर कोन 60 डेज रिमेन एब्सेंट रहबो कंजिक्यूटिव 4 दिन ना कोनरा 4 डेज ना कोन सेटा गणा जीवन यदि अछि सेटा को काउंट करा जीवनी without permissions membership may also end during due to office of profit unsound minds and bankrupt final decision जोडा होची गवर्नर तांको ले 33 को आसीबा आउ कोन जो छाडी दिथिले मे रहिला जोडा कोन सब अछि आउ किछि ऐड करियर अछि जेमि ओटे जिंस बने पेलानी ऐड ना सेशन कथा जो ता भीतर अछि कोन अछि समान करिवे एडजर्नमेंट करिवे प्रोरोगेट करिवे डिसोल्यूशंस करिवे ये ओडे कथा से तार पार्लियामेंट जेमि से जिंसडा अछि
आउ कोरम तो हेगला बिल लैब्स कथा एठी अछि गोटे सेथि भी से बडा थिला जेते बळे सो कोन थिला बिल लैब्स रे कोन थिला राज्यसभा लोकसभा रो जदि कोनोसी प्रकार जिनिस बाहरी छी तो ताहले सेटा लैब्स हे जदि राज्यसभा रो बाहर छी तो ताहले सेटा कंटिन्यू होबो आ लोकसभा रो जाई राज्यसभा को पहुंचे छी से बिलटा कंटिन्यू रहइबो आ पुनी लोकसभा रो बाहर छी राज्यसभा रो बाहर छी प्रेसिडेंट बाहर पहुंचे से आउ बिलटा जीवो नाही लाप्स हबो नाही तो सेई बडी सेम जिंस यार भी देखियो गले आउ वोटिंग देखियो गले सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसु कास्टिंग वोट इसु रिगार्डिंग इसु अछि आगु आगु जदि आसीबो क्वेश्चन हमें देखिबा आई होप कि मैक्सिमम जिंस हमें से दीटा क्वेश्चन रो हमें डिस्कशन करि देले तापर देखियो गले ठीक कोन कहूची लेजिस्लेटिव काउंसिल कथा कहूची टेन्योर होची कोन 6 ईयर विथ इटा काउंसिल कथा ओके काउंसिल कोन हमें पढि सेलेनी काउंसिल कथा भी कहि सेलेनी कोन हो आंसर 6 ठीक year अछि with सर the one third member retired every 2 years correct composition देखियो गेले maximum strength not exceeding one third of the legislative assembly सेटा भी ठीक अछि तापरे हबो election single transferable vote system through indirect elections also the qualification minimum is 25 years এটা 20 30 minimum is 30 30 ओइटा थिला हमर कोन कोड अनुसार कोड तो ए डी कोन करा है काउंसिल पई हम देखले ना लेजिस्लेटिव काउंसिल पई एटलीस्ट 30 वर्ष होइतिबा दरकार असेंबली पई 25 वर्ष होइतिबा दरकार देखिबा एठी कोन अछि tenure legislative council members serve 6 year one third return done compositions done member are elected through indirect done qualification is actually 30 years हाँ ये लिखा है ठीक है legislative council exists 6 states हमें डाटा डिस्कशन के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक एरम कहि नथि कि महाराष्ट्र कर्नाटक छाड़ देली कि ना कहितली कहिथिले सर okay one third of members are elected by local municipalities one third elected जो member हेबे legislative assembly रहिबे 1/12 जो ग्रेजुएट वाला आउ 1/12 टीचर देबे रहिबे किंतु सेकेंडरी हायर एजुकेशन तळकु रहिबे नाही 1/6 सेमान नॉमिनेट हेबे गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर रहिबे हमर डिफरेंट फील्ड जेंति कि आर्ट लिटरेचर साइंस सोशल सर्विस कोऑपरेटिव रे रहिबे चेयरमैन वाइस चेयरमैन आर इलेक्टेड फ्रॉम among the members done 34 question with reference to the legislative power of the state legislature okay the state legislature can make laws on subject in the state list concurrent list okay ये regarding answer ठीक है तो ये कौन होगा आंसर ठीक है ठीक अछि सर तापरे तापरे a money bill can introduce in either house of the state legislature Wrong. Wrong, रॉन्ग sir. है सर yes the money bill only introduced in the assembly रे केवल the Legislative bicameral Assembly. yes bicameral state an ordinary bill most first be passed by legislative assembly then sent to the legislative council as usual the legislative council can delay a money bill for a maximum period of 14 days पर्यंत सेटा को डिले करिबा otherwise सेटा कोन पास लावला पास हिजो तो हमर आंसर हबो सी done then yes 3 same answer correct the money bill delay कथा कहै correct delay only 14 days आउ कोन अछि जानि बारे यदि assembly pass the bill again ताहले से कहूची legislative council consent of the legislative council is not mandatory okay यदि assembly pass bill againly pass कर दबो ताहले legislative council consent है mandatory नुहे का कथा कहूची money bill कथा है ना assembly has the final authority in the legislative matter रे legislative assembly control karibo council of minister को then assembly plays an important role in the policy making executive accountability normal जिंसो member of assembly participate करंती election president of india अंकर जो election हबो सेतिरे कोन कोन president of india रे जो मान को मान रहंती election रे
नॉमिनेटेड मेंबर को छाड़ी के एमपी Right. रहिबे इलेक्टेड एमएलए मेंबर ऑफ रहिबे पार्लियामेंट ठीक है तापरे मेंबर आल्सो इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डन असेंबली मोस्ट अप्रूव टैक्सेशन एक्सपेंडिचर प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट इन नॉर्मल जिंस लिखा विदाउट असेंबली अप्रूवल कौन सी टैक्स कैन बी इम्पोज्ड और नो एक्सपेंडिचर कैन बी इम्पोज्ड तांकर सिग्नेचर बिना ये सब जिंस आगु को पड़िबो नाही देन 35 with reference to the privilege and financial structure relating to the state legislature consider the following statement प्रथम कुछ member of state legislature semane good freedoms of speech enjoy करंती हाउस रे under article 194 एबे से जो हमरो पाठ कोड असला प्रोसीजर कथा एबे असला हमें प्रोसीजर को टिके मने पकिबा कोन कोन सब अछि एटा कोन हबो 35 रो एंजो अच्छा जो ସେମାନେ स्टेट लेजिस्लेचर भितरे जाहि भी किछि कहबे सेटा माने हां डेफिनेटली सेटा judicial ठीक अछि ना कोन एटा ठीक हमरो अछि हां आर्टिकल टा खाली जाई मन रखियार थिला जे डाउट थिबो 194 टा आर्टिकल करेक्ट अछि proceeding of the legislature cannot be questioned in a court of law cannot questions में कर परिबो Correct, ठीक sir. अछि Correct. तापरे Sir, 2-1. members are exempt from the arrest in the civil cases during legislative procedure ई कोन अछि members are exempted definitely Yes, yes. exempted से तापरे लेजिस्लेटिव प्रिविलेज आ सेमानंकु तुमे जदी अरेस्ट भी करिवो क्रिमिनल केस तुमे जदी अरेस्ट करिवो से कहार प्रिसाइडिंग ऑफिसर रो अनुमति रे देही तुमे अरेस्ट करि परिबो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज अलाउ कोर्ट टू पनिश मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस एठी गड़बड़ हे गेला लेजिस्लेटिव प्रिविलेज अलाउ कोर्ट टू पनिश मेंबर कोर्ट पनिश करिवो कोछि हाउस केवल सेमानको पनिश करि परिबो कोर्ट रो हस्तक्षेप एठी नाही किछ सो एटा ही बोल रहबो तो मते आमे टिके प्रोसीजर रिगार्डिंग आमे सब जिंस टिके माने पके जेमि प्रोसीजर कोन कोन थिला हम ऑलरेडी कहिसे जे जेमि ऑर्डिनरी बिल क्षेत्र रे कोन सर 2 ठीक अछि की हां डेफिनेटली एटा क्वेश्चंस कर परिबन पर प्रोसेस ऑफ द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ कर परिबन यस सर यस हां तो आउ कोन अछि आमे ऑर्डिनरी बिल किए नै केसिबो इंट्रोड्यूस करिवो मिनिस्टर करि परिबे ना प्राइवेट मेंबर करि परिबे ना दी जन करि परिबे से के भी कर जण परिबे सर जे भी के करि परिबे दी जन करि परिबे से बळे कोनसी जिंस हेले तीन थर ताको पढा जाय नै कि सेकंड हाउस पास कर देले तापर जाय कि सैंक्शन आसीबो गवर्नर पाखु जीवो से जो सेकंड हाउस पाखु जेतळे जाय से कोन करिवो सेठी तार कोन काम अछि सेकंड हाउस पाखु गले से होची विदाउट अमेंडिंग रे पास कर दे पारे अमेंड करिवो या फिर बिल जाऊ रिजेक्ट कर दे पारे आ सेटा से निज पाखरे 3 मास पर्यंत से पेंडिंग पकई रखि परिबो ए जिंस भी अछि ओके से जो 4 मास कोन लिखाइतला ताले डिले कथा लिखाइतला पेंडिंग हो 3 मंथ रो पेंडिंग हबो की पेंडिंग फॉर 3 मंथ जदि काउंसिल टा डिसएग्री हला तो ताहले से असेंबली को आउथरे पठेइबो किंतु असेंबली पाखरे अल्टीमेट पावर टा अछि काउंसिल चाहिए ताको 4 मास रो डिले करि परियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मंथ रो डिले कौन सी प्रकार जॉइंट सिटिंग डिसएग्रीमेंट रे बसे हुएनी केते बळे जॉइंट सिटिंग बसे हबो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे जॉइंट सिटिंग बसे हबो कि नाही नाही सर बस एइरा ओडे इम्पोर्टेंट तापरे जदि गवर्नर असेंट कथा कहउची चारटा सेबले तांका पाखरे अछि से रखिबे असेंट देइ देबे होल्ड करिवे रिटर्न करिवे या फिर प्रेसिडेंट पई रिजर्व करिवे प्रेसिडेंट को पाखरे सेबले अछि असेंट देबे होल्ड करिवे रिटर्न करिवे रिकंसीडर पई जदि पास करिवा थिबो आ सेते जे माने प्रेसिडेंट पाखु जदि पळेला गवर्नर को कोनोसी प्रकार हस्तक्षेप करि पाइबा नाही मनी बिल देखियो गेले हम ऑलरेडी देखि सेरेनी मनी बिल कथा होची हमें कोन प्रेस हमर होची कहा पाखरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर रो हाथ रे अछि सेटा से कहिबो कि एटा दिस इज अ मनी बिल और नॉट आ से बेले देखियो गेले जो हमर खास कर कि जो 14 डेज कथा हम पढि के आसले सेटा कहा क्षेत्र रे अछि सेकंड हाउस क्षेत्र रे अछि सेटा 14 डेज कथा हला काउंसिल कैन ओनली रेकमेंड चेंजेस आउ मोस्ट रिटर्न द बिल विद इन द 14 डेज कथा कहै या फिर से खास करी मनी बिल कथा कहै ओके आउ कोन देखियो गेले
तापर मते जे लागु छी मैक्सिमम हमें कवर करछंती से जो जिंस लास्ट गोटे थिबो बही रे अछि सेटा होछि कोन स्टेटस इक्वल और अनइक्वल ऊपर गोटे कोन थिबो कसम थिला बोले नै कि सेटा बोध आई थिंक आ प्रिविलेज कथा भी से भला गोटे जगह थिला नॉर्मल जिंस आगु जिबा हला हम देखितले एटा हला डन privilege कथा एटिके देखबा the house has the power to publish or restrict publications of its proceeding house पाकर निजर पावर अछि से निजे चाहिए तार जो जिंस अछि से पब्लिश करिवो और न करिवो या फिर कोनोसी प्रकार की यदि पना करछंती सेटा को रेस्ट्रिक्ट भी कर दे पारे इट कैन कंडक्ट से सीक्रेट सेटिंग कंडक्ट कर पारे यदि नेसेसरी हला आ निज मेंबर को से पनिश कर परिवो और आउटसाइडर for contempt of house. Member also enjoy freedom from appearing as witness in the court during the sessions. तापरे स्टेट फंड कथा अछि आर्टिकल 266 क्लॉज 1 इटा चिकेन गेसला फंड कथा हौ लेखा इस तो पढ़ देबा द आर्टिकल 26 क्लॉज 266 क्लॉज 1 रे अछि कंसोलिडेटेड फंड जो कथा कहै होछिला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट कंटेन से कौन करछि रेवेन्यूज एंड लोन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट a government expenditure is met from the consolidated fund after legislative assembly ର approval रे सेटा हमकु मिलिबो पब्लिक अकाउंट से बडी आर्टिकल 266 क्लॉज 2 रे अछि जोटा कि हमर जोटा आमे जो पैसा रखुछन बैंक रे जहा करछन से रिगार्डिंग फाइन लागिला से सुजिंस कंटेन रिसीव्ड हेल्ड बाय गवर्नमेंट सच एज डिपॉजिट आमे जो करछन कंटीजेंसी फंड आर्टिकल 267 सेथिरे जेते बळे अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर जेतले हबो सिचुएशन यदि कोरोना हैला या फिर फ्लड आसला एई सब क्षेत्र रे सेटा आसीबो एटा कंट्रोल बाय गवर्नर ए जो जिंस आसे ये किए रखिताय का हातर थाय हेडा सर ता देख सर मतलब यूनियन के बारे में बोलेंगे तो कंटीजेंसी फंड सर प्रेसिडेंट के हाथ में थे नहीं फाइनेंस मिनिस्टर या फिर किसी के हाथ में कौन सा था फाइनेंस ऐसा सेक्रेटरी हाँ फाइनेंस फाइनेंस सेक्रेटरी राइट देन चलते हैं 36 में which of the following statement okay then comes to high court not correct position provision relating to high courts are contained in part vi of the constitution under article 214 to 31 high court विषय रे हमें पढ़िया पूर्व क्वेश्चन आंसर करिया पूर्व हाई कोर्ट ऊपर बर्तन मन पकेबा हाई कोर्ट सब स्टार्टिंग रखो कौन कौन अछि अच्छा ठीक अछि पार्ट बीआई 214 200 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दीटा अल्टरनेट करि जिबा हला हम से जिंस रिकॉल हे जिवो चलो प्रथम जीवा आमे कोठु आसिला सेटा आर्टिकल प्रथम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल सर 214 रू सर नहीं सर 124 124 टू 147 यस पार्ट बी खत्म देन हाई कोर्ट रे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ओके हाई कोर्ट रे हम देखले 214 रू 231 पार्ट वीआई डन देन एटा जो आसीची कोठु आसीची এটা গোটে আমার ইন্টিগ্রেটেড জুডিশিয়াল সিস্টেমটা আছে কিন্তু আসিছি কোটু গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1935 সলা আর এটা কেবে বসতিলা কেবে হইতলা প্রথমে জানুয়ারি 28 1950 হলা ইনাগুরেট সেইটি আমার আগুরু থিলা ফেডরাল কোর্ট অফ ইন্ডিয়া থিলা সেইটি চেঞ্জ হেকি আমার সুপ্রিম কোর্ট হেইছি আডা ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟ ରେ କୋଉଠି ଆସିଛି କେତେ ନମ୍ବର କେବେ ଆସିଲା ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଲା 7th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ ଏଟା ଆସିଛି 1956 ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆସିଛି ସେଇଠି ତାର କମ୍ପୋଜିସନ ଖୋଜିବା କଣ କମ୍ପୋଜିସନ କେତେ ଅଛି 34 ଟା ଜଜ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଏବଂ सीजीआई प्लस 33 जज 38 ଡନ୍ ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ରେ स्ट्रेंथ कौन सी फिक्स नहीं सर कॉन्स्टिट्यूशन ले कौन सी फिक्स नहीं
प्रेसिडेंट रो डिस्क्रिप्शन ऊपर कथाबार्ता हुए एटा आउ एथिरे आउ कोन अछि सर हाईकोर्ट अपॉइंटमेंट टा कोन इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 रो आस्थिला कि 18 61 एटा ओकेबा 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो अंडर आसला एटा यस सेठी सर कॉमन हाई कोर्ट सॉरी मु एटा बथे एटा कॉमन हाई कोर्ट कथा कहि देली ओके यस आपण कोन कहले सेटा मते फोन देडा से मु रिकॉल इंडियन कर हाईकोर्ट एक्ट 1861 1861 यस ओके ओके जदि मु भूल सेटा माय मिस्टेक तो एटा जोडा मु 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे एटा मु चले जॉइंट सेटा हला कॉमन हाई कोर्ट टा हबो मल्टीपल स्टेट रे यूनियन टेरिटरी हबो सेटा ओके तापरे कंपोजिशन को आसलो कंपोजिशन गला अपॉइंटमेंट तो तापरे अपॉइंटमेंट कोन कोन सोच यार जो अपॉइंटमेंट अछि तब हमर हाई कोर्ट रे अपॉइंटमेंट 217 कथा को होगी चीफ जस्टिस कोई चलो चीफ कोन कोन जस्टिस मन प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट कंसल्टिंग प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बा गवर्नर कंसर्न स्टेट अनुसार तापर आसी चीफ जस्टिस आसीबे अदर जज मान रहले प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नर एवं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट तापर अदर जजेस आसीबे कॉमन हाई कोर्ट रे देखिया गले से बळी गवर्नर से स्टेट रे जदी अछंती दीटा स्टेट थिबो दीटा स्टेट रे कथा वार्ता करिकि तापर प्रेसिडेंट तांको अपॉइंट कर देबे इते कथा क्वालिफिकेशन एटा इंपोर्टेंट हमें जेतरा कन्फ्यूजन सर 10 वर्ष जो थिले हमरो कोनसी जो एडवोकेट बाबत आउ जुडिशियल मैटर भी 10 वर्ष थिले हे परियो कहा कथा कहूछ माने सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट हाई सर हाई कोर्ट रे हां कोन हाई कोर्ट रे सर माने टेन्योर एडवोकेट बाबरे काम करथि और टेन्योर जुडिशियल मैटर रे ये थिले हे यस डन डन और सुप्रीम कोर्ट रे एमिनेट जुरिस्ट हेतिबे और 5 रो स्टेट 5 ना वर्ष हां 5 वर्ष हाई कोर्ट रे जज थिबे और यस 5 वर्ष और 10 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष एडवोकेट थिबे और एमिनेट जुरिस्ट थिबे प्रेसिडेंट को कंसर्न एथिरे जुरी जो हमर जुरिस्ट जो मान अछंती हमर एमिनेट डिस्ट्रिक्ट जुरिस्ट जोटा एटा सुप्रीम कोर्ट रे अछि किंतु हाई कोर्ट रे एटा नाही नहीं हां आ होची मिनिमम एज नाही डन ओ तो प्रेसिडेंट दियंती तांको गवर्नर दियंती आ गवर्नर 219 हैला 217 रे कोन अपॉइंटमेंट कथा एटी 219 हैला तापरे टेन्योर को देखिया गले 65 एटा सुप्रीम कोर्ट को दे एज 65 नुई की सुप्रीम कोर्ट रे आई गेस सुप्रीम यस कोर्ट सर रे 62 आउ कोन अछि सर एटा 15 अमेंडमेंट रे थिला सुबुनी 15 नंबर अमेंडमेंट रे थिला सर 1963 15 हां हां तापरे आ कोन आसबो रेजिग्नेशन दी जन जाक प्रेसिडेंट को देबे हैला एटा मन देखबार अछि गवर्नर को नुएटी तापरे एक्टिंग एठी हमें जो से दिन देखिथिले एक्टिंग चीफ जस्टिस रिटायर्ड जज कथा कहैतिबो से सब कोन थिला एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रथम को हम एक्टिंग चीफ जस्टिस देखिबा तापरे सेठी कोन अछि केते बळे होबे आसी बेसी जेते बळे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रो ऑफिस ता वैकेंट हे जिवो टेम्पररी एब्सेंट रहिबो आ जेते बळे से माने अनएबल टू परफॉर्म ड्यूटी करिवे एटा थिला आ होची हाई कोर्ट रे से बळे हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस जेते वैकेंट रहिबे बा एब्सेंट रहिबे या फिर 223 थिला तार येटा नुई की से हमर या हाई कोर्ट रो 223 थिला सेठी थिला हमर 226 थिला लेखाइतला से 126 सॉरी सर 126 कोन कहले 126 626 126 हां 126 राइट ठीक है मु 200 को देते 126 तापर रिटायर्ड कथा से बळे आसीबो रिटायर्ड जज कथा से बळे थिला कोन थिला केते बळे से डका जाय स्ट्रेंथ ता जदी फुलफिल हो नथिबो सर बस कोरम लैक थिले माने लैकिंग कोरम कोरम थिबो जदी से बळे फुलफिल आसी पड़े दिया आ कोन सी स्पेसिफिक सिचुएशन ले तांको डका जाय खास करके ए जिंस रे
तापरे आउ कोन अछि जुडिशियरी तार इंडिपेंडेंट hoc जुडिशियरी ad hoc हां judge yes sir कोन कहली ad hoc judge ad hoc जज रे कोन high court ru बस judge सेटा नॉर्मल आउ जिंस होची कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोन हेडा रेकॉर्ड सेटा खाली नॉर्मल जिंस किछि नै कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने कोर्ट रे जो जजमेंट हला प्रोसीडिंग हला सेटा को गुडे स्टोरिंग जिंस रखा प्रिपेयर जिवो होइକି आउ ରହିବ sir हां माने एविडेंस बढिया जो जिंस रखा होची ताकू बेस करके आउ थरे नुवा जिंस जोडा होची कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गुडा असला सेतिरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समथिंग 1971 समथिंग मतलब हला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 अनुसार आसीची केमिति कोन करछि सिविल कंटेम्प्ट गुडे क्रिमिनल कंटेम्प्ट दी प्रकार अछि होय कि कोन क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोन सिविल कंटेम्प्ट तो नॉर्मल माने तुमे जदी जानि सुनि कि तुमे कोन करबो मानिबिनी कोर्ट ऑर्डर सिविल कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट रे बहुत सारा अछि जेमिति कि माने बहुत सारा माने सही माने गोटिए जिंस हेडा कोउथिरे लागिबोनी सेतिरे बहुत सारा अछि हला मो सेडा ये कहि देली क्रिमिनल प्रोसेस रे जोडा अछि पब्लिकेशंस बा कोनस प्रकार एक्शंस तुमे कोर्ट परिसर को तुमे पळेबो तांग प्रोसीजर को तुमे भांगिबो तुमे गोटे पब्लिकेशंस तांकर मिछ पब्लिकेशंस तुमे करदबो हला सेई जो जिंस रे हम ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लागि किन सेई को जिंस रे लागिबोनी तो कहूची जे तुमे इनोसेंट पब्लिकेशंस थिबो फेयर जे थिबो या फिर क्रिटिसिज्म टा करथुवा जोडा सेटा रीजनेबल थिबो ए सब जिंस Oh, I'm a questions question. 37. Persons most serve as a judge of a high court for at least 10 years to the eligible for the appointment of a high court judge. Correct? तापरे a persons who has participated as a advocate of high court से भली 10 वर्ष पर्यंत कथा कुहाइछि तापरे तापटा कोन the constitution prescribed a minimum sir age one ta high court judge ଟା ଏରର ଅଛି 10 year କହିଛି ଏଟା wrong ଅଛି ନା sir कोडा कोडा कहले one ta sir ଏକ ନମ୍ବର एक नंबर टा पढ़ले परा 10 वर्ष पई sir 10 ବର୍ଷ ସେଟା advocate ହେଇଥିବା କଥା ନା high court judge जज ଏଟା judge ଦେଇଛି ता दीटा अछि ना कोन थिला sir supreme court ରେ ସେଟା ଥିଲା ନା 5 out 10 आईपी आउट तो सुप्रीम कोर्ट रे थिला एथिरे कोन थिला माने 5 ବର୍ଷ ହବ कोटा IPS जज ऑफ ए हाई कोर्ट 5 इयर्स राइट आ गुडे थिला कोन आଜ୍ଞା एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट 10 वर्ष सुप्रीम कोर्ट जज 10 पई ବର୍ଷ आ ସାର୍ एथिरे ଆଉ हाई ଗୋଟେ कोर्ट रे थिला ସାର୍ 10 ଏଇ वर्ष ଯୋଉ जुडिशियल ऑफिसर ସାର୍ ଏକ आ ନମ୍ବରରେ ଯଦି एडवोकेट हबो ହବ हाई कोर्ट 10 वर्ष हां हां सर कोन मोटे ये कर देली कोन ଆଜ୍ଞା ଏକ ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଜଜ୍ ଅଫ୍ ଏନି ସବଅର୍ଡିନେଟ କୋର୍ଟରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜରେ ବି ଏଲିଜିବଲ ହେଇପାରିବ ନା ସାର୍ ମାନେ ଲୋୟର କୋର୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ହେଲେ ବି ହେଇପାରିବ ନା ମାନେ आपन ଜଜ୍ ଅଫ୍ कथरे ସବଅର୍ଡିନେଟ हां ମାନେ ଯୋଉ जज ऑफ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ सबऑर्डिनेट कोर्ट ଯଦି 10 ବର୍ଷ ଥିବେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ହେଇପାରିବେ ନା ସାର୍ ओके ସେଇଟା ବୋଧେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଏଇଟା ସାର୍ ଠିକ ଲାଗୁନି ମାନେ 5 ବର୍ଷ ହବା କଥା ସାର୍ sir hold କରିଥିବେ ଯଦି 10 year any judicial office ତ judge ଦେଇଛି sir persons most serve as a judge of a high court for at least 10 years to the eligible for appointment of high court judge sir ସେଟା judge ଜୁଡିସ୍ ତ ଥିବେ ପୁଣି ହଁ judge ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଆଉ କଣ କହିବା କଥା ଆପଣ ସେଟା ଜୁଡିशिଆଲ ଅଫିସର ଅଲଗା ଜଜ ଅଲଗା ୟୁଜୁଆଲି ଥାନ୍ତି ଜଜ ସେଇଟା ଅଫ ସାର୍ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନେ ସେଇଟା ସାର୍ ସବଅର୍ଡିନେଟ କୋର୍ଟ ବୋଧେ ହବ ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ସବଅର୍ଡିନେଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି କୋର୍ଟ ଆମେ ଧରିଛନ୍ତି ଠିକ ଆପଣ ମାନେ ଧରିଛନ୍ତି eligible require 10 years as a judicial officer not necessary high court judge okay ठीक एबा judicial officer बार बार से कथा कहू judicial officer सेटा नुहे आपण धरचंद भी ठीक तापरे a persons who has participated as an advocate of high court for at least 10 years eligible for appointment as a high court एटा ठीक अछि ठीक ଅଛି yes sir ଠିକ तापरे ଅଛି constitution prescribe a minimum age for appointment as a high court judge
No, sir. Sir, No, wrong. sir. No, sir. Wrong question. कौन सी प्रकार नहीं हम देखले the chief justice of high court is appointed by president after consultation with chief justice of India and the governor concerned state एटा में देखले ठीक है सो कौन एटा भूल गेला एटा कोडाटे 2 एवं 4 सी ओके कौन एक्स्ट्रा छी appoint of judges followed a collegium system kotha kochi okay other judges of high courts are appointed by president after consultation with chief justice of a high court judge must be a citizen of India the other candidate must to have a judicial experience and a high level decision making ability देखिबा दरकार जज माने ओथ नियंती गवर्नर को द्वारा ए बसिया पूर्व जज may resigns by submitting resignation किंतु प्रेसिडेंट को देबे removal of high court judges is on ground of misbehavior or incapacity removal procedure ta similar to that of Supreme Court judge body way done 38 question okay original jurisdiction sir kon habo original jurisdiction enforcement of fundamental rights under article 226 ठीक अछि तापरे ये सब तो ठीक है देखा सुपरवाइजरी jurisdiction control over subordinate court calling for the record subordinate court ऊपर हम देखिबा कोन appellate jurisdiction hearing appeals in civil or criminal cases कथा ठीक अछि court of record appointment judges सब Sir, कोन 4 टा दूर गेला B, Two टा wrong, sir. 2 Two टा टा wrong. D हबो. टुटा डी हो सुपरवाइजरी Appointment of judges of subordinate court. appointment of court Court टा এইটা তো court ভুল টা আছে তারপরে এইটা আমার একটা ঠিক আছে দুইটা এটা সুপারভাইজারি কারেক্ট আছে অ্যাপিলেট জুরিডিকশন হিয়ারিং অপিলস সিভিল ক্রিমিনাল কেস কারেক্ট আছে কোর্ট অফ রেকর্ড এটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ জজেস এটা ভুল আছে এটা নুহে ହେଲା ଦେଖିବା এটা স্যার রেকর্ড প্রিজার্ভ করিব না কোর্ট অফ রেকর্ড রে মানে যে ହଁ জজমেন্ট ଏଇଟା କଥା ରେକର୍ଡ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଏଇ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଠିକ ଅଛି ଓଇଟା ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଓକେ ଚାରି ଦେଖିବା ଆନ୍ସର କଣ ଦେଇଛୁ ହେଇ ଦେଖ ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି court of record relating to maintaining record punishing contempt not appointment of judges simple high court also handle कौन करे revenue matters in their original jurisdictions कथा से बड़ी से माने कौन करंती proper maintenance of accounts by subordinate court ए subordinate court बार-बार आछिना हम देखिया subordinate court विषय कहिलो कौन सब अछि केते नंबर आसीबो subordinate court आर्टिकल केते सर 232 ରୁ 237 के बीच में 30 समथिंग 233 ରୁ স্যার 235 सर 233 ରୁ 237 राइट करेक्ट पार्ट वीआई सेटा तो हम जानछे पार्ट वीआई रे अछि जी सर हां आ कोन अछि কোর্ট র জজ কো গভর্নর মানে अपॉइंटमेंट করতে থ্রু द ওড়িশা যে PSC ওড়িশা জুডিশিয়াল সার্ভিস माने माने कोन जो जो ए जो 233 टा कोनटा जो डिस्ट्रिक्ट जज वाला तळ वाला नुई की लोअर कोर्ट तार गोटे से जो थिला बुक जो से डिस्ट्रिक्ट जज परे से जो अछि कोन डिस्ट्रिक्ट जज बा आ कोन सेशन जजेस कोर्ट एटा थिले की डिस्ट्रिक्ट जज थिबो और एंड सेशन जजेस कोर्ट थिला सब सेशन जज सेटा क्रिमिनल कोर्ट के हां एटा होची क्रिमिनल वाला आ एटा होची सिविल वाला ताधर अछि हमर कोन पुणी जो एटा कटिबो डिस्ट्रिक्ट को पुणी आसीबो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट सबऑर्डिनेट देन मुंसिफ हला आउ एथिरे जो क्रिमिनल वाला को चेंज हो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आसीबो आ उडे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट आसीबो ए दु जिंस को आ सबऑर्डिनेट कोर्ट वाला कोन करिवे तांको पाखरे सब किछि थिबो माने कोन सिविल प्रोसीजर अनलिमिटेड पावर थियो अनलिमिटेड पिक्युलर माने जते टंकार केस हिथौ ये से हैंडल करिवे
आ म्युनिसिपल वाला कोन हैंडल करिवे जोटा कि छोट मात्रा रे केस थिबो जोटा स्मॉल पिक्यूनरी वाला केसेस को हैंडल करिवे म्युनिसिपल आ चीफ जुडिशियरी कोन थला वेरी वेरी इंपोर्टेंट जोटा एठी कंफ्यूजिंग दिन जोटा थाए कोन क्रिमिनल केस 7 वर्ष वाला पनिश दे देबो से आ ये देबे मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट से देबे 3 वर्ष रो पनिशमेंट एति खाली ना ये 7 इयर्स इरा 3 इयर्स रो पनिशमेंट ता अंडर रे आउ जहा जा अछि से नॉर्मल जिंस अछि किन आ कोन अछि एई तो मेन जिंसटा के सिविल के क्रिमिनल कथाटा हो कोन तुम जे अपॉइंट करिवे गवर्नर तुमको अपॉइंट करन खास करके हो ठीक अछि आगु सब नंबर हाई कोर्ट रेगुलेट फीस ऑन क्लर्क्स ऑफिस एवं एडवोकेट से ता निजर जेमति हमें देखु जदी ए सब आउची ई सब जिंस तांकरी अंडर अछि डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट सर्व एज प्रेसिडेंट फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट कैन पनिश और कंटेम्प्ट कोर्ट आम जानले दे आल्सो रिव्यू देयर ओन जजमेंट एवं डिसीजन से हम जो बदलु जंदी बार बार सेटा कथा कहउची हाई कोर्ट एक्ट एज ए इंपोर्टेंट अपीलेट कोर्ट इन द जुडिशियल हियरार्की they maintain judicial discipline एवं administrative supervision over the lower court 39 the reference with reference to the jurisdictions and the power of high court consider the following statement high court can hear disputes related to the elections of members of parliament or state legislature ना सर एटा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन का सर हे करियो कौन कहते हाई कोर्ट कैन हियर डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शंस ये सब क्षेत्र रे ही परिबन और हे पे हां एटा जाउची आ अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर जाउनी कि इलेक्शंस कथा हां सेठी गोटे मन पइला सबऑर्डिनेट कोर्ट रे से गोटे को केस आसला हमरो नहीं नहीं एटा नहीं सबऑर्डिनेट कोर्ट कथा से चंदन कुमार केस कथा मन पड़िला चंदन कुमार केस ता कहां रहटा चंदन ट्रिब्यूनल हला ट्रिब्यूनल केस डिस्प्यूट कथा को पसंद तो डिस्प्यूट से तार चंदन कुमार केस रे आगुरु थिला कोन डायरेक्टली तुमे केस ता कोन करिवो सुप्रीम कोर्ट को तुमे अपील जदी करिवार अछि ट्रिब्यूनल को अपील करिवार अछि तो ताहाले तुमे जीवो डायरेक्टली का पाखु सुप्रीम कोर्ट पाखु किंतु चंदन जो केस अछि सेइथिरे आसी लागि जे सेटा तुमे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जीवा दरकार कि तुमे हाई कोर्ट जीवो तापरे सुप्रीम कोर्ट को जाई परिवो सेटा the dispute ko thar mane pala ho high court can enforce fundamental rights through its jurisdictions under article 226 correct achi high court have power of judicial review which forms part of basic structure of constitutions high court have power of judicial ite tari under achi na thik achi tapare high court cannot review their simite hogi wrong achi normal yes ठीक आर्टिकल्स प्रयथर को जेमिति घोसी की जिवार अछि हला रहले माने सिली जिंस गोटे पड़ी गेला माने ई हि जीवन मन पड़िबन कंफ्यूजिंग कि जिवा ताबरे जुडिशियल रिव्यू पावर्स अरेजेस अंडर आर्टिकल 13 32 226 then high court plays an important role in the checking on constitutional laws, right? They safeguard fundamental rights of the citizen, correct? Judicial review ensures supremacy of the constitutions. It helps maintain balance between legislative and executive power. High court ensure rule of law and constitutional governance. They act as custodian of civil liberties at the state levels. Judicial review strengthen constitutional accountability of the government at a normal basis. 40 question. এটা কোন কোন আছে administrative and financial aspect কথা পড়েছি high court judge okay salary high court judge is charged on the consolidated fund of the state ठीक अछि सर पेंशन टा यूनियन रो yes pension is the consolidated fund of india तापरे salary এবং service condition of high court judge are determined by the state legislature के करिवो पार्लियामेंट
Judge of High Court take oath before the governor of the concerned state. ये होची correct. 1 to 4. So it is not correct for judge. 3 only. Done. अपन draw कले. First, second ठीक अछि. एटा होची ए determined by the parliament. तापरे एक्स्ट्रा कोन अछि Chief Justice of High Court receives salary केते करचंदी 72.5 lakhs annually करचंदी 72.5 lakhs. High Court जज सिबली पाखापाखी 72.25 lakhs annually करचंदी. President transfer करि परिबे जज को जे कोनसी स्टेट को किंतु after consultation with the Chief Justice of India. सिबली these provisions was strengthened by the 7th Constitutional Amendment Act 1956. Judge enjoy security एटा हर मन रखला 7th Constitutional Amendment रे भी अछि एटा जोटा पचारि कि जिबे आ कॉमन हाई कोर्ट कथा सेट लगे. Judge enjoy security of tenure until 62 years of age. तांकर salary protected from reductions during their tenure कमिबो नाही. Financial independence केतोल कमिबो emergency time रे कमिबो. Financial independence ensure judicial independence. High Court judges play a vital role in the administration of justice at the state level. 41. Which of the following statement regarding the subordinate court in India not this provision relating to the subordinate courts are contained in part VI of the Constitution under Article 233 to 37. Correct. Subordinate court functions under supervision and control of High Court. Correct. Subordinate court exists mainly at the district level and contribute karibo execution of judicial function and administrative of the justice. Correct. Subordinate court primarily deal only with the constitutional disputes between center and state. सेमिति किछि नुहे कोन एटा से की करे एटा सेंटर स्टेट टा सुप्रीम कोर्ट सर सुप्रीम कोर्ट राइट नॉट करेक्ट पजस डी हो आंसर ठीक है Supreme Court. Position of the judicial system. Supreme Court operate under the supervision of High Court and forms the base of judicial hierarchy. Our purpose and objective is कि जे गोटे justice provide करिवो common लोक माननकु efficient function of the judicial system maintain करिवो. Role of judicial system देखिए गले Supreme Court कोन help करिवो foundations गोटे judicial system गोटे foundations तैयारी करछि lays the foundation of judicial system. How they ensure justice to accessible to the ordinary citizen. Their functioning aim to bring the common man closer to justice. They promote speed and efficiency in the delivery of function. The delivery of justice today I mean normal jinsa kotha rakhe. Structure of subordinate court ek je civil court, criminal court, revenue court tarachi. Civil court joda contract, property disputes, family dispute kotha rehla. Family criminal court deals with offense such as theft, murder, frauds. Revenue courts deals with the land revenue relating matter kotha rehla. ite kotha ho कोन फैमिली कथा कहि देली फैमिली कोटा कोट थिला ओडे फैमिली कोड कथा कोट अछि माने पड़छि केते नंबर तार कोन आर्टिकल अछि कि Money. Family court regarding. Who has the family court? Anyone? Money. Family court as amaro 1984 rola. Family court act. It was. How come? Family related dispute रे marital affair sorry हमरो matrimonial regarding सेही सब जिंस होउची ओ से प्रॉपर्टी केस रे एडा सब आस्ते माने डील करनते ओ आ कोठी हां को जागा रे एटा हुए सेटा इंपोर्टेंट जिंस होची जो जागा रे माने
लोक संख्या 1 मिलियन रु अधिक ହେଇଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଟା ବସାଏ। ଆଉ ଜିନିଷ ହଉଛି କିଏ ବସେଇବ ହାଇକୋର୍ଟ ର କନସଲ୍ଟ ରେ स्टेट गवर्नमेंट फैमिली कोर्ट को एस्टाब्लिश କରିଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା ଏଟା ଆମର ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର তুমি যদি অপিল টা করিব অপিল করিবে যদি সেইটা হচ্ছে থরিয়ে তোমাকে রাইটস মিলিব কি যে তুমি হাইকোর্ট কু যাই যাই পাইব ওনলি ওয়ান রাইটস টু অপিল টু দ হাইকোর্ট এমিতি স্টেটমেন্টটা ଥିଲା। ঠিক আছে 42 କୁ ଆସିବା with reference to the structure jurisdiction and appointment of subordinate court district judges are appointed by the governor in the consultation with the high court। बोलो ठीक अच्छे सर। yes then the person must have at least 7 years practice as an advocate to be eligible for the appointment of district judge। এটা ମୁଁ କହିନଥିଲି ନାଇଁ କି ଏଟା ବି ଠିକ ଅଛି ନା 7 years ହେଲା at least 7 years ତ eligibility କଣ ଥିଲା କହିବୁନି eligibility କଣ ଥିଲା ତାର सर सर अगेन यार क्वेश्चन। डिस्ट्रिक्ट जज रो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस के क्या होता है और द क्वालिफिकेशंस पहला होता है यूनियन और स्टेट किसी भी सर्विस में ना हो नॉट इन सर्विस ऑफ यूनियन एंड स्टेट। देन सेकंड में उसका था एडवोकेट या फिर प्लेटर फॉर 7 years होना चाहिए। थर्ड में हाई कोर्ट रिकमेंडेशंस देना होगा तो इसका 3 क्वालिफिकेशन मीट होना चाहिए उसके बाद गवर्नर आपको देंगे। ठीक है द डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट एक्सरसाइज बोथ ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। क्या होगा सर सही है। So, session judge may award death penalty or life imprisonment, but such sentence required confirmation by the High Court. अभी हमने पढ़े कि करेक्ट है ओके तो होना चाहिए डेथ पेनल्टी जो भी वो खास करके लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर डेथ पेनल्टी ये कंफर्मेशन होना चाहिए इसे हाई कोर्ट से ठीक है हाई कोर्ट होता है। और क्या याद रखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट जज हैंडल करेंगे सिविल मैटर while the session judge handle proceeding तो below them senior civil judge एवं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑलरेडी हम देखिले हाँ जो भी प्रथमे थांती जो ऊपर कहली के हमर का कहली सबऑर्डिनेट जज जी से होची क्लास 1 वाला मुंशी वाला क्लास 2 जूनियर तक कहते हला एटा ये जानछि तापर lower court मुंशी कोर्ट हैंडल्स स्मॉल मॉनिटरी सिविल डिस्प्यूट्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डील करिवे क्रिमिनल केस पनिशेबल अप टू 3 years चीफ मैजिस्ट्रेट हियर क्रिमिनल केसेस पनिशेबल अप टू 7 years ऑलरेडी देखले appointment एवं अदर जजेस देखियो गले अदर सबऑर्डिनेट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियल प्रोसेस इंक्लूडिंग फिलिंग a lawsuit presenting the case hearing examination of evidence and final decision by the court। 43 which of the following statement regarding tribunals okay tribunals कितने हैं बोलो what are the tribunals हम किसे बोलेंगे tribunals is it a judicial
और क्वासी जुडिशियल बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी quasi judicial sir. जुडिशियल also quasi judicial body. So okay. What a specific dispute regarding को बसा जाय था सब देखिया गले कौन अछि हां तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहूची जोडे कि हमें देखिया गले 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 पार्ट XIV A एजरे हम इंट्रोड्यूस कराई कॉन्स्टिट्यूशन लेटा 332 A 332 B 323 A 323 B administrative tribunals 323 A and other tribunals जोड़ा अछि 323 B रे अछि ओके एटा को पे पब्लिक सर्विस पे हला ए पार्लियामेंट द्वारा तैयारी होबो एटा किंतु एटा स्टेट करिवो बहुत करिवे पार्लियामेंट भी करि परिवे यार कोन प्रकार हायर छि नै किंतु ये अछि को हमरो ट्रिब्यूनल कोन केतरा अछि कैट सेट जैट एनु की कैट होची सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के एस्टैब्लिश हितला 1 नवंबर 1985 कौन से या जुडिक्शन को गुजार रहला जेतिक रहला बिफोर दैट माने इटा तुम कहली तार जो प्रिंसिपल बेंच ता जो अछि कोड अछि दिल्ली रे अछि आउ केतरा अछि साइड रे अदर ब्रांच अछि केतरा 19 टा हला बॉडी जे सब यदि पछ बई फॉलो करथबो कोड लक्ष्मीकांत रे जो नाही से जो भूल अछि एबे जोडा नुआ अछि 2021 21 जोडा अछि से सब चेंज हो जाइछ रिफॉर्म ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 से सब चेंजेस इटा कोन हला दिल्ली कथा कहली तापरे या जुडिक्शन जते सारा ऑल इंडिया सर्विस रहला सेंट्रल सिविल सर्विस जोडा होची आ डिफेंस रे सिविल एम्प्लॉय माने जवन काम करछंती से माने को परस बस डन आ कोन आ जो स्ट्रक्चर को मान रहले हां ए मैं तुम्हें ए जिंस देखिलो एटा देखिलो कि जे सिविलियंस एम्प्लॉय माने जो माने डिफेंस रे चाकरी करछंती से माने आसीबे तांको कवर हेबे किंतु एक्सक्लूडेड को माने हेबे डिफेंस ऑफिसर माने एक्सक्लूडेड हे जिवे सुप्रीम कोर्ट रो ऑफिसर एक्सक्लूडेड हे जिवे आउ पार्लियामेंट रो सेक्रेटेरियल स्टाफ हला से माने भी एक्सक्लूडेड अछन स्ट्रक्चर देखिया गले स्ट्रक्चर होचंती स्ट्रक्चर केतरा था मन पकेलो केतरा था मल्टी मेंबर बॉडी हला 60 पूर्वटा था 60 69 हला पूर्वटा था 65 रखा था एबे 69 अछि 69 रे हमर होची 34 टा रहिबे जुडिशियल मेंबर आ 35 टा रहिबे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर डन बस एते कथा टेन्योर कथा इटा टेन्योर टा टिके चेंज हे जी टेन्योर टा बे जी केते कहलो मनोज एटा टेन्योर रे जानि जो टेन्योर टा होची 4 ईयर मैक्सिमम विथ मैक्सिमम 4 इयर्स हला आ 70 वर्ष होची जे चेयरपर्सन 67 होची हमरो जे मेंबर रहइबो मिनिमम एज 50 इयर्स हवा दरकार छैला आउ जो नॉर्मल थला ता भितरे मते दी अछि ठीक है आगु जिबा ट्रिब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल बॉडी एस्टैब्लिश्ड टू रिड्यूस द बर्डन ऑन रेगुलर कोर्ट एंड प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस करेक्ट देन बी रे हबो कोन आंसर को जल्दी provision relating to the tribunals were added to the constitutions by 42nd constitutional amendment 1976 under the part XIVA this one is also ठीक अछि sir. correct the original constitutions of India contain the details provisions regarding tribunals under article wrong अछि कोड बोलेला 42nd नंबर हां ओरिजिनल रे ठीक नथला ठीक सर
हाँ original मतलब 42nd. Tribunals may deals with specialized matters such as service dispute, taxation. ए environment एटा जो other dispute है other 32B रे ଅଛି ହେଲା sorry 323B रे ଅଛି environment जोड़ा concept देखिबा कोन लिखा छी. Tribunals were introduced to provide expert decision making in technical matter. ସେମାନେ help କରିବେ disputes को resolve करिया ପାଇଁ, grievance falling within their jurisdictions. The idea is to improve efficiency in the justice delivery system. Normal. तो judicial distinction देखिया बोले जेते सारा tribunal अछि court रे function all courts are not tribunal. देखो जेती tribunals are courts in a functional sense, but all courts are not tribunals. All tribunals are court, কিন্তু all courts are not tribunals. Tribunals operate alongside the regular judiciary, but with specialized jurisdictions. ସେମାନେ କାମ କରିବେ जो ଭାଗକୁ ଯାଇ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆମେ एग्जांपल से कहूची जेମିତି कि जे टैक्स मैटर, लैंड रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज इश्यूरे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिस्प्यूट, इलेक्शंस मैटर, एनवायरनमेंट ऊपर जेମିତି हैंडल करछि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैटर से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैंडल करछि जोडा हमें कैट कहउछन. साट रे स्टेट औ जाट रे स्टैट कैट जाट कैट साट जाट सेटा कोन स्टेट मैटर हला स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जे रे जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अदर मैटर जोडा रेले आमे देखिले पे जो पढुचंदी सेटा अदर मैटर्स कथा कहउछ. हां सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वाज एस्टैब्लिश्ड कहि दिडा 1 नवंबर 1985. द adjudicate dispute relating to the recruitment एवं सर्विस कंडीशन ऑफ सिविल सर्वेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. करेक्ट अछि. तापर चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स most necessarily be a retired judge of the Supreme Court only. सेमि किछ पढिले कि हमें पाइलेन तो मोटे किछ कहइन कोन हबो ओनली लिखा है सेटा ओनली नुहे एटा कोन हबो सुप्रीम कोर्ट ही परिबे या फिर हाई कोर्ट ही परिबे रिटायर्ड जज ही खास करके बसंत. द मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल इंक्लूड्स बोथ जुडिशियल मेंबर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर. डन. ठीक अछि. सो आंसर हबो हमरो following statement correct हो जासी 1 to 4 देखिबा. yes 1 to 4 yes Chief Justice Supreme Court High Court done. CAT currently 19 टा बेंच कहउतले बे दिल्ली उस तार हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली. ट्रिब्यूनल से कहउची रिड्यूस केस जो बर्डन अछि सेटा कमिबो, स्पीडी ट्रायल्स एवं कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस हमको प्रोवाइड करिवो. Tenure chairman hold करिए 5 years until the age of 65. एटा चेंज हेछि. Members hold office up to age of 62 years. तापरे appointment is made by president on the recommendation of the committee headed by Chief Justice of India or judge nominated by Chief Justice. Appointment किए करिवे प्रेसिडेंट करिवे कहा recommended रे कमिटी उडे गठन कराइते से कमिटी रे किए करिवो हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बसतिबे या फिर जज चीफ जस्टिस जाको नॉमिनेट करिथिबे. 45 Central Administrative Tribunals could have a resolve dispute of recruitment एवं service matter of union employees. ठीक अछि नॉर्मल. तापरे State Administrative Tribunals adjudicate dispute relating to the recruitment and service matter of state employee. नॉर्मल ठीक नहीं. तापरे Joint Administrative Tribunals form for 2 or more state correct National Green Tribunal Environmental Protections Compensation. Correct. So सब ठीक है वो तो भूल लगे छै ना ए डी सी एनो बोल আমি তো জানলে ঠিক আছে এটা বি হবো স্টেট ঠিক আছে জয়েন্ট ঠিক আছে এনজিটি এনवायरमेंट ঠিক আছে. Environment Administrative Tribunal Act 1985 से कौन कहूची सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ओपन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट रे एटा गठन करा जिवो हला स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल टा के करिवो सेंट्रल गवर्नमेंट गठन करिवो. स्ट्रक्चर होची ट्रिब्यूनल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन मेंबर डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शंस कमिटी. चेयरमैन और मेंबर रहंती. वाइस चेयरमैन कंपोजिशन वाइस चेयरमैन पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल abolish age hela eta डी इंपोर्टेंट इनसो इंपोर्टेंट.
भाइस चेयरमैन रो पोजीशन नाही हेती मेंबर आउ चेयरमैन अपॉइंट members who are appointed by central government on the recommendations on the selections committee हम देखले चीफ जस्टिस थिबे हाई कोर्ट रो कंसर्न जदि नांती से ओडे नॉमिनेट कर रखि दियो जण tribunals deals with specialized legal dispute requiring technical expert तापर आसला national green tribunal was established 18 October 2010 ठीक अछि ना ठीक अछि its headquarters are located in New Delhi and it has regional benches in Bhopal, Pune, Kolkata एवं Chennai. सर So correct. ठीक अछि Tribunal consists of chairman, judicial member, and expert members with a maximum of 20 full-time members. Tribunal consists of chairman, judicial member, expert members with maximum 20 full-time members. So it is the mukai mone puni देखिबा हमें. Chairman of the National Green Tribunals most necessarily be a retired judge of the Supreme Court only. এটা নুহে ভুল only ଅଛି। লিখে এটা ভুল হবো 4 কাটি দেলে 1 2 সেମିତି କିଛି নাই 1 2 3 হবো ବୋଲି ସେ ଦେଖିବା ଦେଖିଦେବା এটা তো ঠিক আছে তারপরে हाँ chairperson up to 20 full time members रहिबे बोली मन रखिया हो then statement 4 is incorrect only हबने सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी हबो composition देखिबा एनजीटी may have 10 judicial member एवं 10 टा expert member objective it aims to resolve environmental dispute efficiently ensure environmental protections and sustainable development power ये है कि जे एनजीटी रो award compensations to victims environmental जो damage regarding क्षेत्र रे तांको देबे compensations से बोली it may issue directions for environmental mitigations measures direction मध्ये देबे mitigations measure ପାଇଁ लीगल फ्रेमवर्क देखिया गले को क्षेत्र देखिया पाइछंती वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 वाटर सेस एक्ट 1977 एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशंस एक्ट 1981 वाटर 74 वाटर सेस 77 देन एयर होची 81 ओके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 डन देखिबा आउ तीनटा देखिबा ना रखिबा 9टा हलानी अधन पर क्लास कोन कुछ सर एंड मैडम कोन कहउछंती कोन आगु बढ़िबा तो सर काली करियो ठीक है 47 हम देखिबा खाली केतरा 100 टा क्वेश्चन अछि ना केतरा क्वेश्चन अछि ना पूर्वटा अधिया थिला नै कि हमरो 105 टा अछि हां सर काली हम चेष्टा करिबा जे काली 8 टा रु नै गले पाखा पाखी देखिबा सरिया पे चेष्टा करिबा सरीबो नाही आ गोटे दिन क्लास नबा हौ आगु जाउट अछि आगु जिबा बुझा पड़ुछि तो माने बेनिफिट होउछ माने मो कहया कथा जोटा कि हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव जाउछथि खाली क्वेश्चंस सा मु कहि देले तो सर जीव सब जिंस बुझियो छी खाली मने पकी आ रिकॉल करिवाटा हमको मो हिसाब रे मते ठीक लागुछ आपन मानू केमि लागुछ हम कोन सहयोग चाहू ना कि ओके ठीक है ठीक लागुछ सर ठीक अछि सर चलो थैंक यू एवरीवन गुड नाइट थैंक यू सर Thank you, sir. थैंक यू